हाय दोस्तों, UBXTech में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 में PUBG टेस्ट। यहाँ पर हम दो तरह से टेस्ट करेंगे, एक तो हम TDM प्ले करेंगे और दूसरा बूट कैंप। तो बूट कैंप में हम मीटर का भी यूज़ करेंगे ताकि हम FPS का भी पता लगा सकें। तो यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ PUBG को स्टार्ट। और सबसे पहले आपको चेक करवा देता हूँ ग्राफिक्स। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पर ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं स्मूथ एंड एक्सट्रीम के ऊपर हम प्ले करेंगे। सबसे पहला मैच जो है हम TDM प्ले करते हैं, तो अब आप एंजॉय कीजिए इसकी ओरिजिनल वॉइस के साथ में। Watch out! Killing spree for the red team! Cover me! The red team is in the lead. Expired! Dead! Reloading! Killing spree for the red team! Cover Marked me! a location. Reloading! No mercy! Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Clear! Cover me! Reloading! Marked a location. अब हम प्ले करेंगे बूट कैम्प टेस्ट, और वो भी FPS के साथ में। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर FPS मीटर जो है इनेबल है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितने FPS के ऊपर हमारा जो है गेम प्ले हो रहा है।
तो यहाँ पर अभी ये ट्रेनिंग सेंटर के अंदर है हम। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या पबजी के लिए आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम जो है इसकी ओरिजिनल वॉइस के साथ में एंजॉय कर लेते हैं इस गेम प्ले को। तो ये था पूरा गेम प्ले पबजी टेस्ट का सैमसंग गैलेक्सी F62 में। आपने देखा TDM भी मैंने यहाँ पर प्ले किया और बूट कैम्प भी मैंने यहाँ पर प्ले करके दिखाया, जिसके अंदर मैंने आपको FPS मीटर भी इनेबल करके बताया, जहाँ पर 58, 56, 60 FPS के ऊपर हमारा जो है गेम प्ले हुआ। तो वैसे पबजी के लिए ठीक ठाक फ़ोन है, ना ज़्यादा हीट हुआ है, ना ही जो है बैटरी ड्रेनेज का हमें कुछ प्रॉब्लम इसमें आया है। हल्का सा लैगिंग वगैरह देखने को आया है, तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से हो। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस फ़ोन को पबजी के लिए परचेस करें या ना करें, तो ठीक ठाक फ़ोन है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बेकार है। आप लोग जो अगर पबजी के लिए इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, आप सभी को पता चल ही गया होगा किस तरह का गेम प्ले रहेगा अगर आप गैलेक्सी F62 परचेस करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इस सैमसंग गैलेक्सी F62 की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।